So these are few of the questions which appeared in your previous paper as well. So let's see. These are the basic, just the applications of the kinetic energy formula and so on and so forth. So let's see how will this be done. So one of the questions says a railway engine accelerates a train having a total mass of 1200 tons, and 1200 ton means like 1 ton is equals to 1000 kg. It is already being stated from rest to a speed of 75 meter per second. Question says how much useful work must be done on the train to reach this speed. So here we know only two specific things are given. One is mass given and another one given is speed. So how we are going to begin with, we know if we need to find out the work done. So work done will be equals to what? It will be equals to kinetic energy stored in a body or possessed by a body. So whenever work is done by a body, that work done is stored in the form of kinetic energy in the body, and this will be equals to half mv square. And from this, we can also say that this is 1 by 2. Mass is how much? Mass is 1200 tons. So what is the meaning of 1200 tons? This will be 1200 into 1000. This is going to be the mass. And velocity will be how much? It will be 75 meter per second square. So half into 1200 into 1000 into 75 square. This will be equals to work done. And when we are going to solve this expression, it will be equals to what value? 3.4 into 10 raised to power 9 joules. So our work done will be equals to what value? Work done will be equals to 3.4 into 10 raised to power 9 joules. So this is how we are going to solve this question. Similarly, we are having the second question. Again, this question appeared in some of the previous year papers, that there is a railway engine which accelerates. The total mass is 800 tons from rest to a speed of 50 meter per second. Again, it says how much work is done on the train to reach this speed. So we are going to use a similar concept. Work done on a body in this case, जब उसकी speed इतनी हो गई, it means it is moving, it is storing some kinetic energy in it, and this will be formed from a formula of half mv square. So when it is formed from a formula of half mv square, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? Again इसका mass को plug in करेंगे, half mass आ जाएगा, 1 ton is 1000 kg, so it will be 800,000 kg, and velocity कितनी आ जाएगी? 50 का square. So this whole will be solved as 1 into 10 raised to power 9 joules. So our work done in this specific case will be equal to 1 into 10 power 9 joules. क्या लाजमी नहीं है whenever they are going to say that work done? बेटा ये देखो, फोकस करो कि जब ये कहा जा रहा है वर्क डन फाइंड करें, तो आपको इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है? अगर आपको इन्फॉर्मेशन फोर्स और डिस्टेंस की दी गई है, फिर आप वो फोर्स इंटू डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। बट यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है सिर्फ मास और स्पीड की फॉर्म में, तो इट मीन्स कि वो आपसे ये कॉन्सेप्ट पूछना चाह रहा है कि क्या ये बच्चे को ये कॉन्सेप्ट है कि जो भी बॉडी पे वर्क डन हो रहा है, दैट वर्क डन इज बेसिकली, इट इज बीइंग स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इज दिस अंडरस्टैंडेबल? Yes, sir. ओके। Okay, moving onwards to the next part, we are going to see another derivation or another relation between kinetic energy and momentum. तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है उसको हम थोड़ा गौर से देखते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने मैंने वो एक रिलेशन पेस्ट किया हुआ है। सो लेट्स सी काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। वी नो मोमेंटम इज इक्वल्स टू व्हाट? मोमेंटम इज गिवन बाय फॉर्मूला, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी. And we know what is the formula for kinetic energy. Kinetic energy is given by the formula half mv square. So if I make the formula of velocity, if I make velocity as a subject in the given formula, velocity will be equals to p over m, right? The relation for the velocity will be what? Momentum divided by mass. So I'll replace this velocity in this kinetic energy formula. So when this velocity is being replaced here, kinetic energy is equals to half mass. Instead of velocity, what we are going to get? P divided by m whole square. So we are going to get a relation of what? Kinetic energy is equal to half mass momentum square divided by mass square. So from this we can say mass and mass cancels out.
and we are going to get another formula for kinetic energy in terms of momentum. You have to memorize this. These formulas will not be present in your formula sheet in the exam. So do remember this thing. So kinetic energy is given by what formula? It is the square of momentum divided by twice of mass. So kinetic energy is equals to square of momentum divided by twice of mass. So if a question is being given in terms of momentum and mass, so you could be asked to find out the kinetic energy. So अगर मैं example लूँ, okay, let's say there is one question. An object, a 20 kg object is having a momentum of, for instance, let's take the momentum value as 900 kg meter per second. And question says find its kinetic energy. यानी कि आपको काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने को कहा जा रहा है. मास आपको गिवन है, मोमेंटम आपको गिवन है. तो काइनेटिक एनर्जी तो पहले आपने अगर बेसिक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी कैन सिंपली बी फाउंड फ्रॉम वन फॉर्मूला, हाफ एम बी स्क्वायर. बट यहाँ मास तो गिवन है, बट वेलोसिटी इज नॉट गिवन टू अस, राइट? So but in terms of in other way around, we are given as momentum. So with respect to that, we can say kinetic energy will be equals to momentum square over twice of mass. So from this, we can find out the relation as 900 square divided by 2 into 20. So 900 square will be whatsoever is the value as, it will be somewhat like सर this. हम मोमेंटम और सर हम मोमेंटम और मास से डायरेक्ट वेलोसिटी भी तो फाइंड कर सकते हैं पहले। तो बेटा वो लेंथी प्रोसीजर है ना. आप पहले वेलोसिटी से फाइंड आउट करेंगे और फिर काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे. तो दैट्स अ लेंथी प्रोसेस. आपके पास एक शॉर्ट वे भी है जिससे आपका टाइम सेव हो सकता है, कि डायरेक्टली यू कैन अप्लाई द काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ मास. सो यू कैन जस्ट डिवाइड बोथ ऑफ देम एंड यू कैन गेट द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ जॉल्स. तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ ओके, जाएगी इन टर्म्स ऑफ जॉल्स. थैंक यू सर। Acha, in exam, you could be asked about the graph between the kinetic energy and momentum. So graph between kinetic energy and momentum कैसे बन सकता है? तो अगेन हमें सबसे पहले क्वांटिटीज का रिलेशन देखना है आपस में. अगर मैं कहूँ मास कॉमन है, मास सॉरी कांस्टेंट है, तो कैन आई से दैट काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ मोमेंटम? Yes, I can say kinetic energy is proportional to the square of momentum. एंड फ्रॉम दिस अगेन, जब भी कोई स्क्वायर वाली क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के साथ वेरी कर रही होती है, फॉर एग्जांपल द मोमेंटम इज प्रेजेंट ऑन एक्स एक्सिस एज के जी मीटर पर सेकेंड, एंड लेट्स से देयर इज काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट ऑन वाई एक्सिस. So in each case we will be having the graph somewhat like this. There is always going to be an inclined graph in this specific case. ठीक है, एक पैराबोलिक ग्राफ आपके पास बन रहा होगा. Is this understandable? कि हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम. तो ये बेसिक बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, कि जब कोई स्क्वायर वाली टर्म प्रोपोर्शनल हो, तो देयर इज ऑलवेज अ कर्व बीइंग गोइंग अपवर्ड. दिस इज हाउ द ग्राफिकली इट कैन बी ड्रॉन. इज दिस फाइन? Yes, sir. शैल आई मूव ऑनवर्ड्स? जी सर. Okay, next type of energy is called as gravitational potential energy. So you must write down the definition for the gravitational potential energy first. कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो एक सर्टेन हाइट, लेट्स से कि ये एक ग्राउंड था, दिस वाज अ ग्राउंड, एंड फ्रॉम अ ग्राउंड this is the object जिसका mass है m. It has been taken to a certain height at this top level. ठीक है, एक certain height top level तक लेके गए इसको.
तो when an object has been taken away from the ground to a certain height, so जो इस ऑब्जेक्ट के अंदर इस वक्त एनर्जी पोजेस्ड होगी, दैट एनर्जी इज गोइंग टू बी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट राइज किया जाता है सर्टेन हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द अर्थ, फ्रॉम इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड, तो such type of energy stored in a body is called as gravitational potential energy. And you would have definitely studied in the previous classes as well that this GPE, gravitational potential energy, is given by what formula? mgh. So let's see what is being stated here. इसमें आपको डेरिवेशन भी आ सकती है पेपर में, जो आपके पास यहाँ सामने स्क्रीन पे शो हो रही है। तो लेट्स सी हाउ इट कैन बी डिराइव्ड। तो 1 या 2 मार्क की एक छोटी सी डेरिवेशन है। So there is going to be the when it is moving upward, when this block M is moving upward, so there is going to be one weight of the object, and that weight of the object is acting in the downward direction. Or weight of the object is in the downward direction, and that weight is given by what formula? Weight is given by the formula W is equals to mg. Weight is equals to mass into gravitational field strength. और एक फोर्स इसके ऊपर लगाई जा रही है, और वो फोर्स किस वे में है? दैट फोर्स इज इन द अपवर्ड direction. So we can say when this object is moved up, so work done, this work done will be equals to gravitational potential energy stored in the body. जब ग्रेविटी से अवे इसको लिया जा लेके जाया जा रहा है ऑब्जेक्ट के, तो इसमें एनर्जी कौन सी स्टोर हो रही है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एंड वी नो वर्क डन कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम व्हाट फॉर्मूला? फोर्स इनटू डिस्टेंस। So this will be equals to GPE. तो फोर्स इसमें सिर्फ एक ही फोर्स लग रही, ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड दैट फोर्स इज इक्वल्स टू व्हाट? mg। और कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया जा रहा है फ्रॉम द ग्राउंड? दैट डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड इज इक्वल्स टू mgh, एंड दिस mgh will be equals to gravitational potential energy. ठीक है, so this is how we are going to derive the formula for the gravitational potential energy. कि कोई बॉडी है वो जमीन से उठाकर एक टॉप सरफेस पे लेके जा रहे हैं, टू लेट्स से टू सम हाइट ऑफ h. It has been taken to some height from h, so its formula can be found as equivalent to work done. So work done on this block and moving from ground to the height h, that work done is storing what inside it? That work done is storing a gravitational potential energy inside it. So work done is equals to force into distance, which is equals to gravitational potential energy, and force is given by the formula of mg, which is mgh, and it is equivalent to gravitational potential energy. Is this fine? जी सर। Yes, sir. Sir, जी। I could not understand the derivation, sir. ओके, मैं दोबारा रिकॉल करता हूँ। तो सी, देयर इज एन ऑब्जेक्ट विच इज प्रेजेंट ऑन द ग्राउंड, राइट? और इसके ऊपर हम Okay, एक फोर्स लगा रहे हैं, दैट फोर्स इज बीइंग एक्टेड इन एन अपवर्ड डायरेक्शन, राइट? व्हेन अ फोर्स okay, इज exerted on it, and this block is going to move from the ground to this some top position. So let's say it has covered what distance? It has covered a distance of h, height, h. right? What is the Yes, sir. force? और ये एक कांस्टेंट मोशन में अपवर्ड मूव कर रही है, तो जो फोर्स ऊपर को लग रही है, तो इसका जब ये टॉप पोजीशन पे पहुंचेगी, तो देयर विल बी वन वेट विच इज exerted downward, and what that weight is Okay, equals to? That weight is equals to W, mg. mg. So can we say the work done in moving the object is equals to force into distance? Yes, we can. Yes, आपको एक बात ज़हन में हमेशा याद रखनी है, जब भी किसी बॉडी पे वर्क हो रहा है, तो उसमें कुछ एनर्जी स्टोर हो रही होती है। इस केस में कौन सी एनर्जी okay. स्टोर हो रही है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। GP, So gravitational work done on potential the energy. body is equals to gravitational potential energy stored. So Okay, so work done हम कैसे find out करते हैं? It is equivalent to force into distance. So force is upward, distance is upward, and if it is moving with a constant speed, force and weight will be same. Constant speed means the upward force is equals to downward force. Constant speed means the forces are balanced. When forces are balanced, yes, it means upward force will be equals to downward force. So this upward force F yes, will be equals to W. So F will be considered as equivalent to mg. So work will be equals to mgh.
which is equivalent to what? It is equals to Velocity elastic potential potential energy. energy. Is it fine? Yes, sir. Now I get it. Yes, sir. Now I get it. Okay. Moving onwards to next part. So here we are going to see some graph between the gravitational potential energy and height. तो लेट्स से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है जिससे उसकी हाइट क्या हो रही है व्हेन हाइट इज इंक्रीजिंग अगर हाइट इंक्रीज हो रही है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या ग्राफ कैसा बनेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज प्रेजेंट ऑन वाई एक्सिस height is present on x-axis so we will be having a straight line graph because we know from the formula GPE is equals to mgh. So in this case, GPE is proportional to height. So जब single quantity में direct proportion होगा तो it is starting from the origin और एक straight line आगे को जा रही होगी. So gravitational potential energy is proportional to the height. This is how it will be done. Secondly, if the object is falling, an object is falling, height decreases. So if the height decreases, how we are going to draw the graph for between gravitational potential energy and height? तो जैसे जैसे height जो है वो कम होती जा रही है, आपकी gravitational potential energy will be decreasing. जी आगे चलूं? जी सर. Okay, so this is an example in front of you. So let's see how we can solve this out. Again, it's an exam question. Question says to get to his apartment, a man has to climb 5 flights of stairs. So 5 flights of stairs have to be climbed by a man. The height of each flight is 3.7 and the man has a mass of 74 kg. तो man का mass है 74 kg और जो height है एक flight की वो single height of flight is 3.7 meters. क्वेश्चन कहता है व्हाट इज अप्रोक्सीमेटली गेन इन द मैन्स पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग द क्लाइंब तो उसने कितनी फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स ली 5 एक की हाइट कितनी थी 3.7 तो टोटल हाइट कितनी आ जाएगी टोटल हाइट विल बी इक्वल्स टू 5 into 3.7 so guys can you tell me what will be the answer 18.5. 18.5 meters and we need to find out the gravitational potential energy. Gravitational potential energy is having the formula mgh. Mass given is 74. The value of g is 9.81 and the value of height will be 18.5. So roughly if we multiply all of them, so it will be appearing somewhat near to 13,000 joules. Is this fine? Yes sir. The correct answer in this regard will be 13,000 joules. Simply to find the gravitational potential energy, we will be using the formula mgh. क्योंकि सर जो आपने इससे पिछली स्लाइड शेयर की थी वो एक और बार शेयर कर दें आई नीड टू टेक द स्क्रीनशॉट ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यू कैन जस्ट चेक इन द रिकॉर्डिंग एज वेल ये देख लें ओके नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं दैट इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सो ईच वन ऑफ यू नोज एनर्जी जो है वो कभी भी ज़ाया नहीं होती वो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है सो what does the law of conservation of energy has to say to us law of conservation of energy just speak in a way
energy cannot be created and cannot be destroyed. It only transfers from one form to another. और एक closed system के अंदर total amount of energy remain same. So what's the best definition to define the law of conservation of energy is the principle of conservation of energy says that the total amount of energy, the total amount of energy in a closed system, in a closed system is constant या is same. This is known as law of conservation of energy. तो फॉर एग्जाम्पल कोई एक ऑब्जेक्ट अगर फॉल कर रहा है तो जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है तो टॉप के ऊपर उसके पास कौन सी एनर्जी थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, और जब वो नीचे आना शुरू हो गया तो दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी. इसी तरह हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम की बात करें तो अगर एक कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको अगर कंप्रेस किया हुआ है तो उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे ही उसको रिलीज करेंगे दैट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. और हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं. If we talk about motor, in the case of motor, we give as an electrical energy input होती है हमारी. So electrical energy is converted into kinetic energy और कुछ उसमें थोड़ी सी amount of energy ऐसे होती है जो कि कन्वर्ट हो रही होती है इनटू द साउंड एनर्जी जो मोटर प्रोड्यूस कर रही है, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो जा रही होती है या वेस्ट हो रही होती है वो हो रही होती है इन टर्म्स ऑफ हीट एनर्जी. सो दिस इज हाउ यू कैन सी एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है बट टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी हमेशा सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, एक क्लोज सिस्टम के अंदर. In an isolated system, the total amount of energy remains same. This is known as law of conservation of energy. ये हमारे पास एक एग्जाम क्वेश्चन है, बॉटम पे शो हो रहा है. Which statement about the principle of conservation of energy is correct? Does the energy conversion helps to conserve energy resources? Energy is conserved only in systems with efficiency of 100%. The supply of energy is limited, so energy should be conserved. The total amount of energy in a closed system is constant. So law of conservation of energy की correct definition आपके पास क्या आ जाएगी? D, that the total amount of energy in a closed system will always be constant. Is this fine? Yes, sir. Okay. So moving onwards, एक टर्म मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि एक टर्म हम यूज करते हैं या करेंगे आगे चल के, एनर्जी डिसिपेशन. तो एनर्जी डिसिपेशन का मतलब क्या है कि जब भी एनर्जी कन्वर्जन हो रही होती है कुछ एनर्जी ऐसी होती है जो हमारे लिए यूजफुल नहीं होती. फॉर एग्जांपल अभी मैंने मोटर की एग्जांपल आपको बताई. इन द केस ऑफ मोटर, व्हाट इज द यूजफुल आउटपुट ऑफ आउटपुट एनर्जी? द यूजफुल आउटपुट एनर्जी ऑफ मोटर वाज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटर. But some more energies are also being produced, like heat energy is being produced, sound energy is being produced, and those heat and sound energies are of no good use to us. So the energies during the energy conversion, वो energies जो during the energy conversion produce हो and they are not useful to us and they are lost into the surroundings. Such energies, for such energies, we are going to use a word energy dissipated. So, what is the meaning of energy dissipation? Any energy not transferred to useful energy stores is wasted because it is lost to the surrounding. तो हम इन इस तरह की एनर्जी के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? Energy is dissipated in the form of heat. Energy is dissipated in the form of sound. Energy is dissipated in the form of light, might be, right? तो example हम देखते हैं, for example, in the case of television. In the case of television, कौन सी एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है. It is electrically from the main supply to the thermal energy of the television. Energy is useful transferred by light and by heat
and sound to the surroundings. So what is the dissipated energy? Dissipated energy जो thermal energy उसमें produce हुई और जो भी जो simple क्योंकि thermal energy is not the required or useful energy in that case. In the case of television, so we are going to use the word of energy dissipation. So energy dissipation उस वक्त word use करते हैं whenever the energy which is being wasted, whenever an energy which is produced during conversion is not in a useful form. So non-useful energy is always used in the terms of energy dissipation. Is this understandable? जी सर। इसी तरह हम बात करते हैं अबाउट हीटर। हीटर का काम क्या है? अगर इफ इट इज लेट्स से इलेक्ट्रिक हीटर, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेगा और हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, बट उससे एट टाइम्स लाइट भी प्रोड्यूस हो रही होती है. सो इफ लाइट इज नॉट ऑफ एनी यूज टू अस, प्राइमरली हीटर का काम है सिर्फ हीट पहुंचाना. सो वी आर गोइंग टू यूज अ वर्ड दैट एनर्जी इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट. सो ऐसी एनर्जी जो लॉस्ट हो रही है when which is not useful to us, we will be using a term called as energy dissipation. Is this understandable? सर ये एग्जांपल्स डिटेल में पूछी जाती हैं एग्जाम में? बेटा ये पूछी नहीं जाती है, सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ कि एनर्जी डिसिपेशन का वर्ड अगर कहीं स्टेटमेंट में लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है. एनर्जी डिसिपेशन का सिर्फ ये मतलब है कि अगर कोई भी ऐसी एनर्जी जो कन्वर्ट हो रही है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में और वो साथ कुछ नॉन यूजफुल एनर्जीज पैदा कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, उन नॉन यूजफुल एनर्जीज को हम क्या बोलते हैं या उनके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? डिसिपेटेड एनर्जीज. ठीक है सर। Okay, let's move onwards to the next very important concept. अब हम देखते हैं सबसे पहले क्या क्या एनर्जी कन्वर्जन्स हो सकती हैं विदाउट रेजिस्टिव फोर्सेस. विदाउट रेजिस्टिव फोर्स का मतलब क्या है? कि कोई भी रेजिस्टिव फोर्स नहीं प्रेजेंट. रेजिस्टिव फोर्स किस तरह की हो सकती हैं? रेजिस्टिव फोर्सेस कैन बी लाइक एयर रेजिस्टेंस. रेजिस्टिव फोर्स कैन बी लाइक ड्रैग फोर्स. रेजिस्टिव फोर्स कैन बी लाइक विस्कस ड्रैग. ठीक है, पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है तो लिक्विड एक अपोजिंग फोर्स लगा सकता है और जो उसकी मोशन को रोकेगा. दैट फोर्स इज कॉल्ड एज रेजिस्टिव फोर्स, राइट? सो रेजिस्टिव फोर्सेस आर द फोर्सेस विच आर अपोजिंग द मोशन. तो मैं कहता हूँ लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है ऊपर की तरफ. ये लेफ्ट साइड पे जो डायग्राम है इन विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड, राइट? तो व्हेन इट इज मूविंग अपवर्ड, जैसे ही वो रिलीज हुआ उस पॉइंट पे हम कहेंगे कि उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है? जीरो है. पर जैसे ही उसे मूव करना शुरू हुआ और वो एक पीक पॉइंट, और अच्छा जब इनिशियल पॉइंट था जब उसे मूव करना शुरू किया तो उसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो गई? मैक्सिमम. जैसे ही वो मूव करना उसने स्टार्ट किया तो उसने एक मैक्सिमम पॉइंट पे रीच किया. एज इट रीचेस टू द मैक्सिमम पॉइंट उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? जीरो. और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो. बट होल ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज नाउ कन्वर्टेड इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. तो इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में इस रिलेशन को कैसे लिख सकते हैं? वी आर गोइंग टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन इन दिस वे that as the object is moving upward, there is decrease in kinetic energy, and simultaneously that kinetic energy is converting into gravitational potential energy. So we are going to use equals to increase in gravitational potential energy. In short, we can also state it that there is a loss in kinetic energy which is equals to gain in gravitational potential energy. So we know kinetic energy at the bottom is given with what formula? Half mv square, and the gravitational potential at the top will be given by the formula mgh. तो इनमें और कोई भी एनर्जी कन्वर्जन आपस में टेक प्लेस नहीं करेंगी. तो यहाँ से हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला बना सकते हैं. वो देखिएगा क्या है. वो यहाँ से हम आगे चलते हैं तो वी कैन सी दिस मास एंड मास कट्स डाउन और हमारे पास ये रिलेशन क्या बन जाएगा? हाफ v स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एच
and v square will be equals to 2gh. तो अगर आपने ये फाइंड करना है कि बॉडी कितनी इनिशियल वेलोसिटी से निकली थी, तो उसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा? v is equals to अंडर रूट 2gh. एंड लाइकवाइज अगर आपने ये फाइंड करना है कि जो ऑब्जेक्ट अगर आपने इनिशियली किसी एक वेलोसिटी से लॉन्च किया है, तो कितनी हाइट तक वो पहुंचेगा। तो सिमिलरली फ्रॉम दिस रिलेशन हम हाइट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हम हाइट को ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि h इज इक्वल्स टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g. हाइट विल बी इक्वल्स टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g. तो ये दो फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है. वन ऑफ द फॉर्मूला इज h is equals to v square over 2g and second formula is under root 2gh. और ये फॉर्मूला कब यूज होंगे? whenever any object is falling or rising in the absence of air or resistive forces. ठीक है, ये फॉर्मूला कब यूज होंगे मैं यहाँ लिख देता हूं. These two formulas will be used when object rise or fall in absence of air. जब भी कोई ऑब्जेक्ट राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है और एयर नहीं है, इस स्पेसिफिक केस में हम फॉर्मूला यूज करेंगे v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh एंड हाइट h इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर 2g. हाइट h इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g. इज दिस अंडरस्टैंडेबल? जी सर. एंड लाइकवाइज सेम हैपेंस फॉर द डाउनवर्ड मोशन. जब टॉप पॉइंट पे कोई बॉडी प्रेजेंट है, उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है. जब वो नीचे आके हिट करेगी, और अच्छा टॉप पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, जब वो नीचे आके हिट करेगी, हाइट जीरो होने से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, बट काइनेटिक एनर्जी विल बिकम मैक्सिमम. तो इस पूरी स्टेटमेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. इट मींस लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी. So Gp at the top will be is equals to kinetic energy at the bottom and formula will be mgh is equals to half mv square. तो इस रिलेशन को यूज करके अगेन हम वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी वेलोसिटी से उसने हिट किया ग्राउंड को, और हम हाइट भी फाइंड कर सकते हैं कि कितनी हाइट से ऑब्जेक्ट फॉलन फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम. You people tell me, is this understandable? जी सर. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये सेशन खत्म होने वाला है और हम आज की क्लास भी यहाँ पे स्टॉप करते हैं. और नेक्स्ट हम ऑनलाइन सेशन करेंगे. थोड़ी सी कुछ बातें और रह गई हैं इस चैप्टर में, एंड वो हम उसमें डिस्कस करेंगे.